Hello, good morning. Today our topic is Polo, the king of games. It is on page number 33. Dear students, Polo is a game. This game is played on the back of horse. A player rides on the back of horse and he is having a stick in his hand, but the stick is having a hammer like head. ये जो एक स्टिक उसके हाथ में होती है, उसके साइड पे बिल्कुल एक जिस तरह एक हथौड़े में एक ब्रॉड एंड होता है, इसी तरह इसके हाथ में एक स्टिक होती है. सो वेरियस प्लेयर्स दे आर कमिंग इन द ग्राउंड बाय माउंटिंग ऑन देयर हॉर्सेस. अपने घोड़ों पे सवार होते हैं. एंड हैविंग दीज स्टिक्स, these are called mallets. Have a look here. This is the stick and it has a hammer like head. So this stick is used to carry the ball. The ball is lying on the surface of the ground and each player is trying to follow the ball, and they are tackling the ball with the help of this stick. These sticks which are used to play, these are mallets. As we have seen, the players are playing hockey. They have the hockey stick in their hands, but the shape of the hockey stick is different from this one. So this game, this is called polo, and you can have a look here. This man have taken a ride on the back of horse, running it so fast and playing the ball with the help of this long stick that is called mallet. Yes, dear students, today as the title of this lesson is Polo, the king of games. So I mean to say this game Polo, it is called the king of games. And we have seen so many games are played by common people, but there are certain games which are played by only a few and in certain areas only. So in addition, these games are played with little variations in rules from one area to the other. One such game we are talking of is polo. This polo is the game that has its own rules and regulations, and this game is not played by everybody. This game is played on the horseback as the player strikes the ball with the mallet in his hand, and this fast and furious game. You can just judge here that this game is very fast and it is a very furious, means fearful. एक खौफनाक खेल है. Just to have the posture of the horse and the posture of this man, imagine the speed of the horse and he has to control the ball. There is every possibility of danger. It can take the toll of his life because the horses are galloping at the highest speeds. At one side they have to control the horse, and on the other side they have to concentrate on the game. So this game is very furious, and this game is famously called the king of games. So in this lesson we will learn more about this game polo, which is called the king of games. Now let us start. The king of games, let other people play at other things. The king of games is still the game of kings. So these are the beautiful lines here, and these beautiful lines, they are inscribed. Inscribed means इनको ये लाइनें जो है
ये एक स्टोन पे है. एंड इंस्क्राइब मीन्स टू काव और इनग्रेव, खोदना. पत्थर पर हम खोद के लिखते हैं. दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब. So these lines are inscribed on the stone tablet, means a slate. एक फ्लैट एक स्टोन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टोन टैबलेट विद ए स्मूथ सरफेस. सो उसी पे these lines जो है, they have been inscribed there, they have been engraved. So what the lines speak, let other people play other games. बाकी लोग बाकी जो खेल है वो खेलें. द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स. लेकिन जो बादशाहों की गेम थी वो अभी भी बादशाह ही खेलते हैं. So from the lines, what we understand that these lines want to tell us that there are so many other games played by the common people. Let them play their games. Let somebody will play cricket, hockey, kabaddi, football, kho, badminton, etc. But this game polo, it is still the game of kings. Ordinary people, common people are not associated with this game. So these verses are inscribed on the stone tablet beside a polo ground. There is a polo ground situated in the south of fabulous Silk Route. In the previous lesson, I have told you that the Silk Route, it was only an existing entry in the primitive times. So this is very famous. You might have also read it in your history that the Silk Route जो है वहाँ उसके साउथ में एक ग्राउंड है, पोलो का एक ग्राउंड है. So this Silk Route it goes from China to the west. चाइना से वेस्ट की तरफ ये जाता है. तो वहाँ पे पोलो ग्राउंड में इसके किनारे पे एक टेबलेट, एक स्टोन टेबलेट जो है वो लगी है. और इस पे ये जो लाइन्स है, let other people play at other things, the king of games is still the game of kings. So these beautiful lines are written there. Sums of the ancient history of the oldest organized sport. So these lines, they sum up the history of the oldest organized sport. It means that this game polo was played in the ancient times. So it is a witness of the ancient history. The stone which is inscribed with these beautiful lines, जिस पत्थर पे ये खूबसूरत lines खोद के लिखी गई है, तो ये एक सपोर्ट है कि जो पुराने ज़माने में इस खेल का इनकाद किया जा रहा था. With it is reputed 2500 years. तो तकरीबन यहाँ इससे इस स्टोन से हमें पता चलता है कि ये जो पोलो की जो गेम है, इसे आज से पहले तकरीबन 2500 साल खेला जा रहा था. यानी पिछले 2500 साल से ये गेम जो है ये मार्ज वजूद में है. और since then it was started by the kings and still it is liked and loved by the kings. So this is also called the king of games and or the game of kings. So certainly polo reflects all qualities that made the Mongol horse the greatest nation of horsemen in the ancient world. Certainly polo reflects all the qualities. लेकिन पोलो खेलने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो ये तो कोई भी हॉर्स पे नहीं चढ़ सकता है. एंड इट इज़ नॉट द कप ऑफ टी for of everybody's cup of tea that each and everybody can go for the game. No, this ये जो game है, it reflects all qualities that made the Mongol. You see that you have also read in your history about the Mongols. They were the hordes, the greatest nation of horsemen. So these Mongols जो है, in the quite ancient history, we have seen that it was a large group of people
these Mongols who were highly trained, highly skilled, ये जो बहुत महारत रखते थे इस घुड़सवारी में, मेड द मंगोल, और यही कारण था कि बिकॉज दे वर हाईली स्किल्ड इन द हॉर्स राइडिंग, वो हॉर्स राइडिंग में काफ़ी महारत रखते थे, तो इसी वजह से वो दे वर रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ हॉर्समैन। ये जहाँ तक घोड़ों की हम बात करते हैं, ये सबसे ग्रेटेस्ट बढ़िया कौम मानी जा रही थी इन द एंशंट वर्ल्ड। पिछले ये जो माजी है, इसमें उनको बहुत महानता हासिल थी घुड़सवारी में, तो इसी वजह से वो बेस्ट वेरियर्स जो थे, लड़ने वाले जो थे, तो इनका जो रोबदाब था वो पूरी दुनिया में चल रहा था। So, if we see the fame of these Mongols and their success in the ancient times, that it was because of this skill they were having of horse riding. Great extant skills, ये जो extant जो means relating to the horses, the skills, the necessary things which are required for the horse riding, so that is relating to the horses and riding of the horses, that is called extensicles. These Mongols were highly proficient, they were highly skillful, ये बहुत हुनरमंद थे इस घुड़सवारी में, with a clear eye and stout heart or the prerequisites of a polo player. Dear students, यहाँ पे ये क्या राइटर जो है वो ये कह रहा है कि एक एक प्लेयर जो है जो पोलो खेलना चाहता है, तो उसके लिए जो पहली शर्त है, दैट इज़ ही शुड हैव अ वेरी क्लियर आई साइट, उसकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए, नंबर एक। एंड दूसरी बात है, ही शुड हैव ए स्टाउट हार्ट, स्टाउट मीन्स कदावर जो है, मीन्स वेल बिल्ड, फैट एंड वेल बिल्ड, इसका हार्ट जो है, यहाँ पे स्टाउट हार्ट जो है, तो इट मीन्स दैट उसका दिल जो है वो मजबूत होना चाहिए। स्टाउट एक मजबूत दिल की ज़रूरत है, एक कमज़ोर दिल वाला जो है वो खेल तो देख भी नहीं सकता है, उसको डर लगेगा। So, in order to become the player of this game, so there are two very important conditions. First one is that one should have a clear eyesight, and second thing is that he should have a strong or stout heart. These are the prerequisites. Prerequisites means when we are going to do something, और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, कोई काम जो होने वाला है, तो अगर हम पहले ही देखेंगे कि उस काम के लिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है, तो वो उस काम के लिए प्री रिक्विजिट्स बन जाते हैं, जिनको हम उर्दू में लवाजमात कहते हैं। तो ये दो बातें जो है, हैविंग ए कीन आई साइट, तेज़ नज़र, और स्टाउट और मजबूत दिल जो है, ये दो चीज़ें जो है, दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द पोलो प्लेयर। पोलो was born in Central Asia. नाउ लेट्स गो टू द ओरिजिन ऑफ दिस गेम। देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई। तो इसने जन्म लिया है इन द सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया में। स्पेंट इट्स चाइल्डहुड इन ईरान, तो इसने अपना जो चाइल्डहुड है, बचपन है, यानी इस गेम ने अपना बचपन जो है वो पनप लिया उसने कहाँ पे, ईरान में। एंड अटेन्स मैच्योरिटी इन द नॉर्दर्न एरियाज, फिर जो शुमाली इलाके हैं ईरान में, वहाँ पे उसने अपनी अपनी मैच्योरिटी मीनस बलूगियत हासिल की, वहाँ पे ये बालिग हो गई ये गेम धीरे धीरे। फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली सेपरेट एज फॉर एज जापान। तो ये जो सेंट्रल एशिया को की जो स्टेप्स है, स्टेप्स मीन्स अ प्लेन हैविंग फ्यू ट्रीज, एक प्लेन एरिया जहाँ पे फ्यू ट्रीज होंगे, कुछ दरख्त होंगे, दैट एरिया इज़ कॉल्ड स्टेप्स। तो सेंट्रल एशिया के जो स्टेप्स है, ये गेम जो है ये आखिरकार इवेंचुअली मीन्स इन द लॉन्ग रन, आखिरकार इट सेपरेट, ये फैल गई एज फॉर एज जापान, ये जापान तक फैल गई, चाइना तक फैल गई, तिब्बत एंड इंडिया, और इंडिया तक। नाउ
Over the age, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills. The aristocrat, now you know that this game is not played by the common people. ये game जो है ये आम लोग इसको नहीं खेलते हैं. So this game is liked and it is played by the kings. So this is called aristocratic. Shahana जिसको हम कहेंगे. So is played by the great and rich people, people of the high strata. ऊंचे तबके के जो लोग होते हैं, especially the kings. So this aristocratic game developed to promote equestrian and military skills. तो इसमें इससे क्या होता है, ये जो गेम खेलते हैं इससे इस खेलने वाले में पैदा होते हैं एक्सट्रेन मीन्स रिलेटिंग टू द हॉर्सेस राइडिंग. तो हॉर्स राइडिंग जो है इसके स्किल्स इसमें पैदा हो जाते हैं. और जब पुराने ज़माने में हमने ये भी देखा था कि जो जंगी लड़ी जा रही थी वो घोड़े के घोड़े पर सवार होने के बाद ही लड़ी जा रही थी, फिर चाहे हाथ में तलवार हो तीर हो जो भी हो. तो इस तरह तो जो वॉरियर होता है, जो सिपाही होता है, लड़ने वाला होता है. सो वी मीन टू से दैट दिस गेम it enhances the skill of equestrian means how relating to horse riding. ये इस स्किल में इजाफा कर रहा है, इसमें बेहतरी आती है. तो इससे मिलिट्री स्किल्स, जो मिलिट्री स्किल्स होने चाहिए एक सोल्जर में, एक सिपाही में, वो भी पैदा होते हैं. And was ranked next to battle itself as the ultimate test of prowess of princes and warriors. तो जब किसी को पुराने ज़माने में जब बादशाह अपने जानशीन का ऐलान करता था अपने बाद, चाहे वो उसका बेटा होता या उसकी बेटी होती, वेदर दैट वाज ए प्रिंस और दैट वाज ए प्रिंसेस. तो ये नहीं है कि बादशाह ने ऐलान कर दिया तो इसका बेटा या बेटी प्रिंस या प्रिंसेस बन गई. नो, उसके लिए एक टेस्ट होता था दैट द प्रिंस और द प्रिंसेस बिफोर अटेनिंग दिस टाइटल, इससे पहले इनको ये खिताब मिले, दे हैड टू प्रूव द टेस्ट. इनको एक टेस्ट प्रूव करना पड़ता था. दैट वाज द sword fighting, या दैट वाज दिस मिलिट्री skill, this game polo. They had to display the game if they have the skills of horse riding, and only then the announcement was made that they have become princes or these warriors or the prince. Patronized by kings and horsed cavalry. So this game patronize, we mean to say that when you are behaving with others as if they are not important. जब आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे कि ऐसा लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैट्रोनाइज. सो पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स एंड द हॉर्स्ड कैवलरी. क्योंकि जब ये गेम खेली जा रही थी वहाँ पे इस पूरे गेम पर जो नज़र बनी होती थी, इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स एंड हॉर्स्ड कैवलरी. और जो घोड़ों पर कैवलरी जो है ये फौज का एक टुकड़ी होती है, एक छोटा सा दस्ता होता है, ग्रुप होता है, दैट इज माउंटेड ऑन द ट्रूप्स. ये जो ट्रूप्स जो है दे आर माउंटेड ऑन द हॉर्सेस. जब घोड़ों पर फौज की एक टुकड़ी होगी, दैट इज कॉल्ड कैवलरी. सो इट वाज प्लेड बाय द लाइक्स ऑफ डेयर्स, Genghis Khan and Alexander the Great. So this game, it was patronized by the kings, and the horsed cavalry means that the soldiers are mounting on the back of the horse, and when we have a group of soldiers that are mounted on the back of the horse, that we call cavalry. And this game was liked by the Dryads, the famous kings of the history, like Genghis Khan, like Alexander the Great. ये वो लोग थे जो इस गेम को खेलते थे, इस गेम को पसंद करते थे, and they were highly skilled in this game. In India, polo was widely played in medieval times. तो इंडिया की जब हम बात करेंगे, when we talk to India, we see that this game जो है इसको बहुत खेला जा रहा था वस्ती दौर में, medieval period में, and it is and it is evidenced from the fact that Sultan
कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपने एक बड़े जो मुसलमान बादशाह गुजरे हैं जिसका नाम था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो जो है इसका क्या हुआ, हु बिल्ट द कुतुब मीनार, ये वही बादशाह है जिसने दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया। डाइड ऑफ अ फैटल एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर, तो फिर उसके उसके मौत का जो कारण बन गया, तो वो इसका एक शदीद हादसा हुआ। यही गेम खेलते खेलते, पोलो खेलते खेलते, जब वो लाहौर में पोलो गेम खेल रहा था, तो वो एक शदीद एक्सीडेंट का शिकार हुआ एंड ही डाइड। तो इससे पता चलता है कि पोलो इंडिया में मिडिल जो वस्ती दौर था इसमें खेला जा रहा था। अंडर द मुगल्स, फिर मुगल बादशाहों का दौर था। पोलो वाज द नेशनल सपोर्ट ऑफ इंडिया, उनके दौर में पोलो जो था, पोलो गेम जो थी वो हिंदुस्तान की एक कौमी गेम मानी जा रही थी। इंडिया until the end of the 16th century, फिर 16th century के इख्तिताम तक, during the period polo enjoyed the patronage of kings, तो उस दौर तक ये जो पोलो जो थी, इस गेम पर पूरी जो नज़र बनी थी, जो ये कंट्रोल में थी, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड, और इसको खूब खेला जा रहा था इन द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स, चाहे जो सूबे थे, प्रोविंसेस थे, जो शहनशाहों के थे, उनके कोर्ट्स में, इनके दरबार में, चाहे वो राजपूत किंग्स थे, इस गेम को खेला जा रहा था। इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ द 18th सेंचुरी, तो फिर 18th सेंचुरी में जो दौर था, पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन, तो हिंदुस्तान के नक्शे से ये पोलो जो है ये बिल्कुल गायब दिख रही है। हाउएवर इट सर्वाइव्ड इन अ फ्यू रिमोट माउंटेन्स एनक्लेव्स, लेकिन कुछ जो पहाड़ी एनक्लेव्स थे, एनक्लेव इस पोर्शन को बोलते हैं, एनक्लेव इज़ ए पार्ट ऑफ ए कंट्री, किसी मुल्क का जो पार्ट, कोई हिस्सा होता है जो बाहर से, जो इट इज़ सराउंडेड बाय द फॉरेन टेरिटरी कंप्लीटली, जब कोई पोर्शन फॉरेन टेरिटरी से पूरा घिरा हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड एनक्लेव। Here we see this game vanishing on the map of India, but it was seen it survived, ये जिंदा रह गई in a few removed, दूर दराज जो mountains, पहाड़ी enclaves थे of great subcontinent, notably in गिलगित, तो इसमें गिलगित पड़ता है, लद्दाख एंड मणिपुर, इन वहाँ के पहाड़ों पे ये गेम देखने को मिली, नहीं तो ये पूरी हिंदुस्तान के नक्शे से गायब दिखाई दे रही थी। Polo has been for centuries a popular support of the rugged mountain valleys of the Karakoram range, तो पोलो जो है फॉर सेंचुरीज, सालों तक, 100 साल तक ये बहुत पॉपुलर एक सपोर्ट रही है, सिर्फ उन इलाकों में, इन वादियों में जहाँ ये रगड़ माउंटेन्स थे, ऑफ द कराकोरम रेंजेस, कोई कराकोरम का सिलसिला जहाँ जा रहा है, चाहे बलूचिस्तान की बात करेंगे, लद्दाख की या मणिपुर की, पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हिमालयन रीजन ऑफ गिलगित, खासकर जो इनएक्सेसिबल थे, जहाँ पर इंसान आसानी से नहीं पहुँच पाता था, नहीं जा पाता था, क्योंकि उस टाइम जो रोड कनेक्टिविटी थी दैट वाज क्वाइट मिजरेबल, तो आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाता था इजीली। इसमें आता है गिलगित, होंजा, स्कर्दू एंड कपालो इन बल्तिस्तान एंड लद्दाख। ओके।